Hello guys, welcome to my channel Ahaniac Style. Hope you all are doing well. So today I am going to share with you a soft nude makeup look. So do not further ado, let's get into the video. Before I start with my makeup, मैं एक मॉइस्चराइज़र से अच्छे से मेरा स्किन मॉइस्चराइज करूँगी. I am using the moisturizer from लैक्मे पिच मिल्क मॉइस्चराइज़र. ये एक बहुत लाइट वेट एंड क्रीमी मॉइस्चराइज़र है. मैं इस मॉइस्चराइज़र से अच्छे से फुल फेस में मसाज कर लूँगी. अच्छे से मसाज करने से स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है एंड मेकअप बहुत लॉन्ग लास्ट करती है. नाउ आई एम यूजिंग अ इल्यूमिनेटर फॉर अ सटल ग्लो ऑन माई स्किन. मैं ये स्विच ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ द इल्यूमिनेटर इन द शेड गोल्ड. समर्स में इल्यूमिनेटर लगाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई हो रही है एंड फट रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ फॉर आ ग्लोई एंड डूवी बेस. इसको भी मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी फुल फेस में. Next, I am using primer. I am using the primer from Inside Cosmetics. It's a 3-in-1 oil-free and long-lasting primer. Primer helps to protect the skin and last the makeup. Next, I am using a color corrector just to even out my skin. मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं. The corrector I am using is from Sweets Beauty. It's a very good creamy corrector. Then एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. For the foundation, I am using Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation. This foundation is so creamy as it blends like magic and ये एक buildable coverage की foundation है. If you want more coverage, you can build it up. मैं फाउंडेशन को अच्छे से फुल फेस में स्प्रेड कर रही हूँ. यहाँ पे मेरा हेयर्स मुझे बहुत तंग कर रही थी, इसलिए मैं उसको टाई कर दी. देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी स्पंज मैं पूरी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सीमलेसली. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप. आप जितने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे उतना फ्लॉलेस आपका मेकअप लगेगा. अगर आप फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका मेकअप बहुत केकी एंड पैची दिख सकता है. Next, to highlight my face, I am using a concealer from Inside Cosmetics. मैं अपनी हाइलाइटिंग पॉइंट्स में कंसीलर अप्लाई करूँगी एंड उसको भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी. अच्छे से कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं एक लूज़ पाउडर और सेटिंग पाउडर से मेकअप को अच्छे से सेट कर दूँगी. आई एम यूजिंग द सेटिंग पाउडर इज़ फ्रॉम शुगर. मैं अच्छे से हाइलाइटेड पॉइंट्स एंड फुल फेस में मैं लूज़ पाउडर से अच्छे से सेट कर दूँगी. Next, to
fix my makeup, I am using a fixer. This is the fixer I am using is from Faces Canada. मैं फिक्सर अपनी फुल फेस में स्प्रे करके उसको अच्छे से ड्राई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर कोई एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ ब्रॉन्ज़र। आई एम यूजिंग द ब्रॉन्ज़र इज़ फ्रॉम शुगर। द शेड आई एम यूजिंग इज़ वुडी वंडर। मैं हल्का ब्रॉन्ज करूँगी जस्ट टू गिव अ शेप टू माई फेस। Next, for pink cheeks, I am using the blush from Nykaa. I am mixing both of the shades and applying on my cheeks. Now let's move on to the eye makeup. मैं आईज में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैं एक न्यूड एंड सटल आई लुक क्रिएट करूँगी। द आई शेडो पैलेट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम स्वीड्स ब्यूटी 9 कलर आई शेडो पैलेट। मैं एक लाइट पीच कलर लेके मेरी फुल आईलिड में मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। Now I am taking a darker shade of peach and just to enhance my crease line मैं वहाँ पे प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी। Next I am using mascara. I am using the mascara from Color Bar. ये मस्कारा बहुत एक अच्छी मस्कारा है। ये लैशेस को क्लम्पी नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी लोअर लैशेस करना भूल गई थी। मस्कारा से पहले ही लोअर लैश करनी पड़ती है, सो आप लोग मत भूलिएगा। मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी लोअर लैश में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड अच्छे से स्मज कर रही हूँ। Next, for the lipstick, I am using a nude color. I'm using the lipstick is from Lakme Light Matte Liquid Lipstick in the shade Nude Dream. ये एक बहुत pretty एक color है। These lipsticks are so lightweight, so creamy, so good. बहुत अच्छा है ये lipsticks. The next step is the last and the final step. I'm using highlighter.
The highlighter I'm using is from Sugar. It's a highlighter palette. मैं इस पैलेट से एक पिंक रोज़ गोल्ड शेड मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस की हाई पॉइंट्स में। यहाँ पे मेकअप होती है कंप्लीट। आई होप you all liked the makeup look. So do not forget to like, share and subscribe to my channel Ahaniac Style. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.